शुक्रिया साद साहब। Okay. जी साहब आप कोर्स हो चुके हैं, हम इनको बना लें कोर्स ना। अच्छा जी, एक मिनट। Saboor साहब, I'll make you host. You can share your जी जी जी। साद साहब को होस्ट कर दो। जी सर, मैंने बना दिया। He should share जी ठीक है, थैंक यू। slides. जी, go ahead, Saboor Singh. जी, आपको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? जी, I can see. जी, तो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ईवी की जो डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज द रियल environment in the rest of the world, क्योंकि that's going to impact Pakistan as well. कि we need to get our definition of EV correctly, क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, so we need to fix our definitions as well. So पांचवी जो चीज़ है वो थोड़ा सा मैं स्लाइड ब्रीफली समराइज करूंगा COP28 के, क्योंकि I've been watching COP28 very closely for what is the outcome of COP28 for e-mobility and what are the key focus for e-mobility, क्योंकि that's again going to affect on Pakistan. Global EV charging infrastructure. So this is just an example, क्योंकि this is a localization is very बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो few examples मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से एक सेक्टर को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ग्लोबली क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। और सातवीं जो चीज़ है वो आई विल जस्ट कवर ब्रीफली अबाउट कि हमारी फैमिली, Zeppler is a family of localization. How do we achieve this localization, और हमारे ग्लोबल पार्टनर्स कौन कौन से हैं, so that's again an awareness for everybody. आठवीं कि how to reduce localization cost. So ये हमारी लर्निंग है बेसिकली, दिस इज कि हमने जो पिछले 3-3.5 साल के अंदर लर्न किया कि how to reduce production cost. That's something is we can apply on EV production as well. और लास्ट में यह है कि just one slide talking about 10 years plan, कि where are the priorities should be. This is again Zeppler's view. People may have different views on their own priorities, but this is where we think that priorities should be based on the global industry. Any questions so far? Because these are the topics that I will cover for under localization. Those are good topics. Let's go through them. Okay, so just for everybody's benefit, you can see this is the scooter that on the left that I have. This is an example of EV two-wheelers, and you got a middle. There's a scooter which is pretty much widely used in China. An example. So ये picture जो आपको दिखाई दे रही है localization की, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद की picture है. I think it's PSO station. The picture on the top is CD701 of our organization launch. This is another EV example, and ये हमारी European launch for 2024 electric vehicles. So that's again. So these are the kind of things कि जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं चीजें. So I just wanted to give a snapshot of what's happening in the world. For a very simplistic way of explaining the localization is breaking down the two-wheeler into all the parts and put it on one small place, and you can see that how many industries that we need to develop just on a simple two-wheel scooter, which is used heavily by youngsters, fun riders in Europe, USA, and you can see that this is called localization. So अगर आप इसको गौर से देखें तो there are places कि जिसमें electronics भी है, there's a harness there are mechanical bits and pieces, the indicators, wheels, which are everybody knows. Basically है कि there is a lot of mechanical components, so that triggers an alarm कि हम तो पहले से बना रहे हैं बहुत सारी mechanical components, so we are very good at. It's just few things that we need to focus on. That's something we can work together and start working on and start prioritizing those. एक चीज आपने इसमें देखी होगी कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, आपको
पिक्चर के अंदर तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको वो लोकलाइजेशन में दिखाई नहीं दे रही कि वो क्या चीज है वो। एनीबॉडी कैन गेस कि इसमें क्या चीज जो इंपॉर्टेंट है जो दिखाई नहीं दे रही? Software. Charging station. Software. Absolutely right. Software. So software is not visible, or it's something that we need to be we need to talk more often, because that's where really the evolution of electric vehicle is going to be. So software and platform hardware electronics is something that we really need to be putting this into context of EV localization. So that's the message I wanted to give. Moving on. Again, same picture. So क्या 7 boosters हैं जो हमारी EV की localization को एकदम से boost कर सकती हैं? So this is again, I've been thinking about it. So these 7 boosters, I feel that these are important, but there may be other things and you may have different ideas. So number 1 is really regulatory push. We need, as a nation, we really need a push, because that's something that it's not as a nation. This is a global phenomenon now that everybody needs to be pushed by regulations. We don't change ourselves until and unless कि हमें बताया ना जाए कि हाँ आपने ये काम करना है, अगर ये नहीं काम करेंगे आप तो आपके पास और कोई काम नहीं है. That is called regulation push. दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट कि हमें कस्टमर्स को बहुत ज्यादा गहराई में समझना है, और कस्टमर्स की सबसे जो खास तौर पे पाकिस्तान की कस्टमर्स जो हैं वो दे ऑल कॉस्ट ड्रिवन, और पाकिस्तान का नहीं है, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो दे आर कॉस्ट ड्रिवन. यूरोप का, यूएसए के, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज वी आर ऑल कॉस्ट ड्रिवन. सो दिस इज नंबर 1 क्राइटेरिया हमारा आफ्टर रेगुलेशन के, कि जो हमें that's an input into the localization process, कि हमें इसको बहुत गहराई के अंदर समझना है, और हर चीज में customers comes right at the top. कुछ चीजें हैं जो हमें इनपुट ये भी है इस लोकलाइजेशन के लिए कि पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाए विद इनिशिएटिव्स. इसको बार बार इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस किया जाए कि ये हमारी बूस्टर हैं, ये इनिशिएटिव्स के, इसके बगैर जो है it will take very long time कि हम अपनी लोकलाइजेशन को फास्ट करें ईवी की. चौथा इनपुट कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है जो हमारी लेगेसी है 2 व्हीलर्स की या 4 व्हीलर्स की. we need to transform them rather than reinventing everything from scratch. So बजाय इसके कि हम एक हर चीज को बिल्कुल सेपरेट कर दें, we need to convince our legacy automotive industry कि जिसको हम transform करें. That is the way I've learned कि Europeans are doing, that's the way Chinese have done, that's the way everybody is doing, transforming ourselves into a new era of electrification rather than talking ourselves and doing everything ourselves. So using the existing knowledge infrastructure जो भी है and convert them into a new automotive or new energy vehicles. Chhatta is अपना process develop करें. That's absolutely important कि localization में if I say कि China में manufacturing process क्या है, वो उनकी कल्चर और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक उन्होंने बनाया और उसके मुताबिक उन्होंने एडजस्ट किया. यूरोप के अंदर, यूएसए में, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, इंजीनियरिंग प्रोसेस. पाकिस्तान के लिए दिस इज अगेन माय लर्निंग दैट वी हैव टू डेवलप आवर ओन प्रोसेस that fits the needs of the nation, that fits the needs of the engineering process की बात कर रहा हूँ, okay, that fits the needs of the nation, that fits the needs of the time. That is something we can discuss for hours and hours on what is this process. Or last number 7 is ecosystem. Think about ecosystem. You can't work आप हमेशा अकेले नहीं काम कर सकते. Automotive has got 100+ years of legacy of ecosystem. ये कभी भी नहीं होगा कि ecosystem के बगैर जो है वो we can start working ourselves और उसके बगैर. So ecosystem को हमेशा सबसे पहले
हमने सोचना है कि इकोसिस्टम को बिल्ड करना है ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए उसका आउटपुट that is called socio-economic impact कि must not forget this is all of what we're talking about is all to do with socio-economic impact कि ताकि ये कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर सकें that can help each and everybody towards the company's goals, country's goal, global United Nations goal, whatever it is. So we talked about physical domain. थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लें कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है for software production software localization especially in the context of electric vehicles. So आज की दुनिया में software features और functions जो हैं वो they are so important and they are evolving very very fast in the electric vehicles. क्या वजह है इसकी कि now the cost of the software is relatively easy because of the tools and processes which were there about 20 years ago. Now it's become very, very, very easy to do. The knowledge of the customer needs, especially automation के हिसाब से, they are growing every day. For example, safety के हवाले से आपने देखा होगा कि आजकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो तकरीबन तमाम दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड हो गया एबीएस तो तकरीबन 15 साल पहले था लेकिन ईएसपी इज आल्सो स्टैंडर्ड नाउ वी आल्सो नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि हमने क्या चीज स्टैंडर्डाइज करनी है खास तौर पे ब्रेकिंग सिस्टम में और कितनी हमारी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं फॉर नॉट हैविंग द ब्रेकिंग सिस्टम या फिर ईएसपी सिस्टम नाउ व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट ईवी देन इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपने इन तमाम सिस्टम्स को साथ इंटीग्रेट करना है क्योंकि that without this it is unsafe to drive on the road. So इसलिए it's important now कि vehicle supervision especially जो electric vehicle के अंदर होती है that's called VCU vehicle control unit that is something कि हमें उस culture को भी develop करना है कि we need to start developing this कि without the VCU which is the brain of the electric vehicle that you cannot make the vehicle safe. So that's where all the safety strategy, integration with all the tamam systems, jo architect hai, that has to go on the vehicle supervision control. दूसरी चीज फंक्शन सेफ्टी सो जिस तरीके से मैंने बताया कि डिमांड जो है वो अब दुनिया की चेंज होती जा रही है और पाकिस्तान की भी डिमांड चेंज होगी क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग द गुड व्हीकल्स फ्रॉम चाइना and they are coming with these features: adaptive cruise control, they're coming with automatic park assist, they're coming with these new features of lane detections. So all of these features जो हैं वो हमें we want them, even ये कि we want them in Pakistan as well. So these are the competition कि अगर हम localization को concept को समझ रहे हैं तो we also need to learn about function safety क्योंकि without vehicle supervision understanding we can't make the vehicle safe because automotive जो है वो is becoming very very complex now. I don't want to talk about zonal control, this is the new next generation products लेकिन ये कि अभी सिर्फ ये है कि हम basic चीजें जो functional safety की हैं that's something we need to learn and implement in our localization. तीसरी चीज जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है चाइना के अंदर बाकी दुनिया के अंदर कि डायग्नोस्टिक्स कि diagnostics के बगैर तो you can't live in any automotive. That's the bread and butter for any car. Lekin diagnostics is now shifting into preventive diagnostics on air. So that's happening. It's already happened in many cars और ये आगे भी होता जाएगा. तो that's another area कि हमें इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि that is gonna come and that's gonna bite us. हमें इसके लिए तैयारी करनी है. Not only for localization but also for dealers as well कि dealers कैसे deal करेंगे इसको. Number 4 software आप देखा होगा कि it's not part of the bill of materials और इसको आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन अब ऑटोमोटिव में एक नया कल्चर आ गया जिसे कहते हैं कि ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर हाउसेस ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इसका मतलब ये है कि
ये एक commodity बन गई है software in automotive, and because of connectivity इसकी जो नई features आ रही हैं, safety, advanced functions, advanced algorithms, this is now becoming part of the commodity. So even though it's not seen in the part of bill of material, लेकिन ये है कि it is now sellable. Features are sellable. कि आपने extra feature लेनी है, just like application. कि application की subscription लेंगे, you get more money to pay. Exactly the same. Automotive is going into a feature-based, subscription-based फीचर्स जिसके बारे में हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि दैट्स गोना कम। इसके अलावा ये है कि जो स्टैंडर्ड लोकलाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करते, दे बाय द सॉफ्टवेयर एज अ ब्लैक बॉक्स, तो कम से कम उनको मिनिमम लोकलाइजेशन के लिए टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग, दैट इज समथिंग के जो हमें शुरू में करने पड़ेंगे, स्पेशली अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है या डेवलप नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। सो एटलीस्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन पर्पस we can get the software, लेकिन ये कि we don't have to develop, just get a black box software, but do the calibration. Calibration is majority of the effort, तो at least वो तो कर सकें हम लोग। और आखिरी चीज जो which is very important to know is that it is a normal practice for all OEMs कि this is what I've observed कि पहले ये होता था कि conventional automotive industry में we used to rely on tier 1 suppliers, कि tier 1 suppliers is providing the ECU, tier 1 suppliers providing the software, लेकिन आजकल because of complexity and cost reduction, in-house capabilities develop. This is kind of normal now. Every OEM is developing their own controller and the software. So ये थोड़ी सी मैं आपको localization के हवाले से बता रहा हूँ कि this is a practice. This slide, I don't want to go through this because I was looking for more specific about EVs, लेकिन ये कि this is very, very generic EV sales for 2023. So it's not going to give us any benefit कि उसमें हम लोग बात कर सकें in detail. ये slide जो है थोड़ी सी important, especially from demand perspective, कि international pledges क्या हो चुके हैं, खास तौर पे जो लीडिंग कंट्रीज हैं उन्होंने नेट जीरो के प्लेजेस 20 कर दिए हैं। बेसिकली नेट जीरो मींस के देयर इज नो इंटरनल कंबस्शन इंजन in many vehicle platforms, or even if there is a combustion engine used, then it will be used as a range extended rather than as a traction engine. So there is a lot of commitment going on, or people are acting on it fast. They are behind, a lot of international communities behind, लेकिन ये है कि they are still acting on it. We need to have our own commitment as well, but in a more detailed way. That's something that policy should drive. अच्छा, कुछ चीजें ये है कि COP28 के हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि 3 चीजें जो हैं वो आउटकम हैं मेजर, स्पेशली ई मोबिलिटी के हिसाब से या ई मोबिलिटी लोकलाइजेशन के हिसाब से, कि जनरल कौन सी स्पीड बम्प्स हैं, कौन सी इनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो उनमें से 3 प्रॉब्लम्स हैं। सो नंबर 1 ये है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म जो है ग्लोबल, it's not as effective as it should be, so incentives are still very low. Charging infrastructure is very, very poor, in not only in China but also Europe का भी यही हाल है कि it's very poor. So that's an area कि जिसको prioritize किया गया कि it has to go on higher, क्योंकि ये चीजें trigger नहीं कर रही इंडस्ट्री को fast. अच्छा सबूर साहब, जी जी, sorry to interrupt. There was a request if you could go into slide mode or the presentation mode. presentation mode. Screen Okay, level I'll further. try. There you go. Thank you. So रेगुलेटरी रिफॉर्म जो है वो उसकी रिक्वेस्ट ये भी आई है फ्रॉम दिस दिसंबर COP28 के R&D को जो है वो उसमें रेगुलेटरी रिफॉर्म किए गए, नॉट ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बट ऑल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल व्हीकल, स्पेशली फ्यूल सेल के हवाले से
there's a big push ke fuel cell or range extended vehicles is now taking over the battery electric vehicle, और वो really इसके बारे में serious हैं कि that's where the volumes can start ticking over now. Especially Japanese ने जो अपने patents lose तमाम जो हैं वो publicize कर दिए हैं fuel cell के. So that's an area कि जिसमें हमें we need to be cautious कि electric vehicle is not only electric vehicle, there's also another electric vehicle called fuel cell electric vehicles, range extended electric vehicles, and hybrid electric vehicles. तो ये areas जो हैं अब काफी तेजी से develop हो रहे हैं. तीसरी जो चीज है उन्होंने जो हाईलाइट किया, जो मैंने पहले भी मेंशन की थी कि affordability is still a big problem. It's one of the biggest problem कि people are not convinced कि cost can justify for the return on investment. So especially different geographical locations. So that's a big area, it's the biggest area कि जिसमें और there is a study from Nickel Institute कि जिसमें total cost of the electric vehicles that really explains that it's still not compatible to a conventional vehicle. So that's an area कि जिसमें काम की मजीद ज़रूरत है कि affordability is one of the major issue. So हमें भी इस चीज़ को समझना है कि what are the problems कि जिसमें affordability को is one of the biggest challenge कि उसको किस तरीके से cost को reduce किया जाए. So ये एक picture मैंने लगाई थी इसलिए कि this is an example of Vietnam. So Vietnam basically उन्होंने net zero की commitment कर दी है for 2050. So there won't be any vehicles with any internal combustion engine. So it will be alternative fuels vehicles. और उसके लिए government or industry leaders they made a commitment in COP28 that Vietnam is going for it. And just for this initiative, there's a lot of investment coming up in Vietnam. So that's just an eye opener for us कि हमारे लिए कि we also need to have these kind of presence in COP28. So based on COP28, मैंने इसको prioritize कर दिया है कि why EV charging is one of the trigger thing कि जिसको हमें समझना है. It's not only पाकिस्तान के लिए लेकिन it's a global 6 triggers कि जिसको हम utilize करके we can boost up the EV charging localization. So उसमें पहली जो चीज है that's about understanding the customers, putting the customers right at the center of infrastructure. क्योंकि होता ही है कि charging station लगा दिए जाते हैं in too far away without thinking about कि उनकी needs क्या हैं, where the vehicle is going to be. सुबह जिन्होंने ड्राइव करना है ऑफिस में या फिर जिन लोगों के पास चार्ज deplete हो चुका है, they need to go to the fast charging station. Charging stations are like 5 or 10 miles away. So where the new constructions are coming up, where the new parking stations are coming up, यहाँ पे stations हैं, that's where I think charging stations should be, और इसमें है कि the customers should be the center of all the infrastructure policy and planning, especially for new town जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, जहाँ पर उसमें the policy should have some impact on the construction of the new cities, towns, या societies जो बन रही हैं. If we have these policies say on this will trigger some initiative for other people to purchase electric car. दूसरी चीज policy plan, again this is a global 3 right numbers need to be identified कि हमारी अगर prediction है कि okay हमारी अगले 5 साल के अंदर X amount of vehicles we're going to import or localize, or then we need to have the right number of chargers. If there is no right number of calculation, then there will be a problem of demand. So demand is going to be a big issue. So right number of chargers, right numbers aligned with EV growth, how many chargers, and the right spec of the chargers, which is a regulation, or TCTDA can right location. So again, this is something that 3 rights we need to remember. TCT जो
charging regulation ke hawale se hai कि we still haven't got a charging regulation. So UK, after many years now, there is a regulatory body called off charge in UK. और off charge का काम ये है कि they don't look at many other things. They just focus on electric vehicle and making the giving the benefit of कि charging को कैसे affordable बनाया जाए. So that's the objective. कि how can they make charging more affordable for EV customers? So that's another area कि हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि should we be making a focused charging regulatory body rather than it के वो ministry के under आए, then it gets influenced by many other things. So there should be a dedicated charging regulatory body. That's again a global thing that's happening. Number 4 is right to charge investment thinking. कि EV vehicle और conventional vehicle को जब तक आप उनको right नहीं देंगे कि एक customer they're taking an ownership of electric vehicle, but they don't have the ownership of parking, for example. They don't have an ownership of enforcement. That is their priority. They should be getting this location, this position, in comparison to conventional vehicle. So then it's not going to promote. So we need to have some kind of right for charging investment thinking. Yeah. So that's another area कि we can think about. Ring fence funding. आम जबान में इसको कहते हैं कि you create a ring or boundary और उसको lock कर दें funding को for 10 years. So अब phenomena ये हुआ है कि if you want to promote charging, then we need to allocate budget in the parliament कि जिससे कि that's a mandatory. Without this, you cannot grow EV industry. So some kind of ring fence concept that can be introduced कि जिसमें public-private partnership हो, that will trigger again this charging industry. Or last one is really about promotion and incentives of green energy. So green energy का मतलब ये हुआ कि जो लोग घरों के अंदर solar panels या green energy को initiative दे रहे हैं कि वहाँ से use कर रहे हैं, they should be getting some more incentive on the charging prices, on the tariff prices for electric mobility. कि electric mobility भी है उनके पास अगर, और साथ they also have solar panel, then they should be really giving more incentives ताकि यह कि ज़्यादा culture generate हो green energy का. So this is again a global phenomena that's being triggered और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है. तो that's something else कि हम लोग पाकिस्तान के हवाले से भी देख सकते हैं. Right, so Zeppler as a global family for localization. So this is our Zeppler bubbles that we've developed in 3 years for localization, which has got many suppliers. So in reality, all these bubbles, these are new industries that we've developed because we are indigenous manufacturers of the sensors. So all of these are new industries. They are making parts for us. They're making different things. So it affects on the socioeconomic impact. And that's again, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये कि ताकि this is what will happen when we make one part of the electric vehicle. You create small bubbles and lots of bubbles, and eventually it will impact the overall economy. Bubbles सिर्फ local ना करें, bubbles make it global bubble. So for example, हमारे ये है कि we always thought about कि we're not making products for Pakistan only, we're making products for the world. So उसके लिए हमने Chinese partners भी रखे हैं, हमने UK के partners, USA के partners, UAE के partners, we got Pakistani universities, UK universities aligned with this. So that makes a nice little global family. So that's why Pakistan has got the edge in manufacturing, cost-effective manufacturing. We have to make this as a global localization rather than local localization.
थोड़ा सा very quickly, you can read it in your own way. These are the lessons कि ये lessons है जो हमने learn किए हैं for localization के लिए कि localization में has to be knowledge based localization. If it's not knowledge based localization, then you can't grow, you can't expand in the current world. Yeah. So for example, आपने localization करनी है किसी एक component की, तो you have to measure it, you have to fully instrument it, you have to measure the things, चाहे वो software हो चाहे वो hardware हो, it has to be learned और उसके measurement करके then you put down as the complete requirements, then you start doing tear down. Tear down is the second step, बजाय इसके कि हम tear down कर देते हैं सबसे पहले हमसे और उसके बाद यह कि हमें समझ नहीं आती कि आप क्या करें, उसके बाद यह कि हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं. No, we need to start localization at the product level, at knowledge based localization. Instrument करें, put sensors in, अगर कोई चीज नहीं आती तो you can ask us. That's number one criteria कि आपने एक benchmark करना है product को अपने competitors से. अगर आपके पास benchmark नहीं है competitors के, then you can't really compare जब आपकी product तैयार होगी पाकिस्तान के अंदर. Step 2 is tear down. So this is another level of benchmarking कि जिसको आप localize करने से पहले, another level of knowledge building. For example, इसमें मैंने example battery की दी है कि battery, there are three different types of battery configuration: cylindrical, prismatic, pouch. So पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज होगी? So the moment you tear down, you will find out कि हम इन तीनों में सबसे जो relatively easy है वो is prismatic configuration, is relatively easy to manufacture, so we can go for that because it's a cost effective. It may not be very reliable or it's not very high life, लेकिन ये कि it's the best number one entry for us to start thinking. So without tear down हम लोग उसको समझ नहीं सकेंगे. और बजाय इसके कि if we start moving into cylindrical position कि जहाँ पर 850 के करीब quality stations हैं, we realize later, oh, we didn't think about it कि इतनी ज़्यादा इसकी quality checks हैं. Why did we go for cylindrical prismatic direction? We should have gone for a cheap. We are in the developing country. हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जो हमें एक vicious circle के अंदर ले जाएं जहाँ पर जिसके पीछे 50 साल की मेहनत लगी हुई है. we can't achieve that in a short space of time. So that's something else कि जो tear down से सीखा जा सकता है. Step 3 is top 5 components जो highest cost है जिनकी आप सिर्फ उनको फोकस करें, बाकी चीजों को आप low priority में रखें. How to reduce the cost of these 5 components. That is necessary क्योंकि उसमें आपको ideas होंगे, changing materials, changing design in a way. बजाय इसके कि हम if you start just taking the information from China and then start building the drawing, और उसके बाद ये कि हमने start doing the machining, we will end up in a vicious circle कि हमें पता नहीं होगा कि oh, is it going to work, और end पे होगा कि cost is going to be so high कि हमें we can't even sell it. Yeah. So customer always comes first. So understanding at the system level, subsystem level, then we move into a cost number one criteria. Cost को किस तरीके से reduce किया जाए by changing the design, by changing the parameters, etc. Number 4 is understanding the business models of competitors. हमारे competitors कौन हैं? We should know that. कि कौन से competitors हैं? If you don't have a competition, you cannot make yourself better. So build a competitor right from the day one. कि जिसको सामने रख के आप अपने आप को improvement judgment करें और उसको analyze करें कि हमने उससे बेहतर कैसे बनाना है. Always keep ahead. Number 5, localization is very important कि उसमें automation की thinking जो है right from the day one हो. Or automation is start from the raw material all the way till the box or end product. If you don't do that, हमारे process time is going to be long, cost is going to be long, everything is going to be long. So calculation
आपकी start हो जाती है right at the concept level, जब आप concept पे develop कर रहे हैं कि what is your process time. Very, very important. Number 6 is product specific focus. कि बजाय इसके कि हम we become master of trade of everything, yeah, we have to be focused on one area at a time. So example ये होगी कि cathode battery में, for example, there are 5 key suppliers for just for battery cell की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ battery cell में 5 key suppliers कि जो battery cell manufacturer जो battery integrator है वो they consider one is the cathode material supplier, anode, electrolyte, bus plate, separator plate material, बाकी जो छोटी-छोटी हैं I'm not लेकिन these are 5 key suppliers जो और ये these are independent manufacturing businesses. Yeah? These are independent. So we need to decide कि हमने किस area में काम करना है, cathode में, anode में, electrolyte किस area में. So become a specific specialist in that area. Number 7 is all about volume and volume and volume. So from the day one, whatever specialization जो भी आप जिस area में भी काम कर रहे हैं on the EV, think about volume. And my last wording is, so Pakistan is ideal for cost-effective manufacturing. Think globalization, not localization. That's what it should be. The volumes can only come when you think global. Volumes will not come when you think local. So that's the last message of how we can reduce the cost of the product. Again, this is a very, very quick slide कि जिसमें key components of electric vehicle जो हमारी priority होनी चाहिए. Excuse me कि मैं अगर abbreviations मैंने details नहीं किया लेकिन मैं आपको explain कर दूंगा कि high voltage is HV, battery pack and harness. Currently, we think these are again illustration purpose क्योंकि जो actual contribution bill of material में होगी वो that depends on the actual technology underneath. So for illustration, for understanding, I think it's a good split of battery is one of the major costs of battery or harness. It's about 20%, 15 to 20% depending on the technology for localization. Battery control unit or battery management system software is about 7%. Electric machine, most of the electric vehicles and 4-wheelers के बारे में बात कर रहा हूँ कि they are around electric machine is about 18 to 19 or 20% cost of the overall vehicle. MCU, which is motor control unit or MCU software, is about 7%. TMS, thermal management system, which is जिसमें आपकी refrigeration system, battery cooling system, then you've got a motor cooling system, then you've got cabin cooling system. ये तमाम चीजें जो हैं that accounts around 6%. और उसके बाद ये है कि then TMS ECU or software is about 5%. So altogether about 11% of the vehicle cost. Then we come up with vehicle control unit, which is VCU. That's हमने इसके बारे में बात की कि that's a supervisory control for the vehicle. VCU हो गया और VCU software, that's about 4%. OBC is onboard charger or onboard charger software, that's about 5%. If it is a multi-speed transmission, 2-speed transmission, then there is a transmission and TCU that's cost around 4%, 4 to 5%. Regen braking, which is again important, and integration with ESP system, the conventional braking system है उसके साथ, or regen braking is about 5%. And finally, instrument panel that reflects the driver gets a feedback for all the electric vehicle parameters. That's again 5%. And the rest of the conventional vehicle is around 40%. So ये एक bill of material cost distribution है that could be used as a guideline कि ये तमाम चीजें जो हैं these need to be localized at some stage. So my thoughts are कि in the next 3 to 5 years we prioritize on जो mechanical components हैं, we prioritize on those, or software which can easily be done. That's something we can prioritize first.
Or jo high tech industry, high tech technology here, that's really on the battery side, battery cell side. That's something we can start thinking about in 6 to 10 years as a joint ventures with tier 1 suppliers, global tier 1 suppliers. Or we can do the things jo hame karni chahiye. For example, power electronics software is something that we can do early days. So the goal should be in the next 3 to 5 years, 50 to 58% localization of all of these things. On the next 6 to 10 years, the rest of the 42% with the support of tier 1 suppliers, jo baki exist karein, because their cost is, we can't meet the cost, because they make the things for the rest of the world. So you can't beat the prices. So us hisab se ye hai ki we have to do 2 steps. First, 3 to 5 years goal and 6 to 10 years goal. And that's about it. Yeah, thank you very much, Saboor Saab. Really good information. Let's open it up for questions or comments from participants. The best if you can raise your hand, let me know who's got a question or a comment. अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन चीज़ें हैं जो आपने जिक्र किया एक स्लाइड में अपना जो जिसमें कि जिक्र था मुख्तलिफ पैरामीटर्स का जो कि मकामी तौर पे करने के लिए ज़रूरत है उसमें वहाँ पे एक क्रिटिकल पैरामीटर मैं उसमें ऐड करूँगा वो है इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन ऑन अ लोकल स्केल और पीछे जाइए थोड़ा सा और पीछे हाँ ये यहाँ पे इस स्लाइड में जो है जो लोकलाइजेशन बूस्टर्स हैं इसमें इनोवेशन इज वन आइटम, क्योंकि पाकिस्तानी माशाल्लाह हमारे लोग बहुत इनोवेटिव हैं उसमें, लेकिन इंजीनियरिंग साइड पे इनोवेशन इतनी नहीं है, टेक्नीशियन साइड पे आपको ज़्यादा इनोवेशन नज़र आती है लेकिन दैट इनोवेशन हैज़ टू ब्रॉट इन, तो आपके जो लोकल इश्यूज हैं मुख्तलिफ किस्म के, यू हैव टू एड्रेस दैट। दूसरा जो प्रोसेस डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान में कोई इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, दे आर एड हॉक, तो दैट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि एड हॉक प्रोसेस में आपका जो रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ड्यूरेबल आउटकम। तो एक तो मेरा ये, दूसरा जो आपने आखिरी जो स्लाइड दिखाई थी जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें परसेंटेजेस आपने लिखे हुए, मेरे ख्याल में ये दिस जस्ट परसेंटेज ऑफ ईवी कंपोनेंट्स ओनली, नॉट द एंटायर, नॉट द टोटल व्हीकल, इज दैट करेक्ट? Yeah, so इस पे जो other vehicle components हैं, that's really about 40%, 14%. बाकी जो चीजें हैं वो these are all EV related. अच्छा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में फोर व्हील व्हीकल के लिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे शायद, ना कि exactly। ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। I have to do one at a time. Maybe ये कि two wheelers के लिए it's a different distribution. Two wheeler is much simpler in a way. So आपका जो पहला क्वेश्चन था innovation के लिए, तो definitely I fully agree with you कि Pakistan has got a lot of talent and innovative brains, entrepreneurs. That is definitely लेकिन मैं एक step इससे भी ज़्यादा आगे जाऊँगा कि innovation is not only in engineering side, innovation is also on the on the process side, innovation is on the ecosystem development, innovation on the knowledge base. So ये तमाम जितने elements हैं, they all need to add innovation into this process. So that's a general phenomena. But you're right कि focus group भी होना चाहिए कि we that can add more value in the product engineering as well. Achha, Malik Arsalan Saab has his hand raised, and then Mashood Saab. So let's go to Malik Arsalan Saab first, and then Mashood. Ji, can you hear me? Ji, I can hear you.
Okay, so this is Malik Ashan from thank you very much, sir. Very wonderful presentation. Just add two questions. First one कि जो आपने बोला कि बैटरी जो टाइप्स हैं जो सेल्स टाइप्स हैं प्रिज्मेटिक एंड सिलेंड्रिकल, एक मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें कि हाउ दे आर चीपर देन सिलेंड्रिकल. वो जो आपने 800 समथिंग स्टेशंस की बात की है, इसका मुझे बता दें. सेकंडली ये कि अभी जैसे स्वैपेबल का कॉन्सेप्ट आया हुआ है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए और थ्री व्हीलर्स के लिए, तो क्या प्रिज्मेटिक सेल भी उतना ही ड्यूरेबल है फॉर दोज काइंड ऑफ बैटरीज जो कि स्वैपेबल बनाई जाती हैं या एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर बनाई जाती हैं? सो these are two of my questions. Gigi, it's a very good question. Architecture, battery design architectures is a very, very big subject. कि उसमें what are the pros and cons of these three or four different configurations. So imagine करें कि जो laptops की में जो batteries इस्तेमाल होती हैं, they've got a architectural needs कि उसको किस तरीके से cool किया जाए. They don't have air coming through as such कि उसमें तो fan होता है and that fan has to come up when the temperature gets to a certain threshold. लेकिन जो batteries ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वाटर कूल्ड, वो पानी से उनकी हीट रिजेक्ट होती है. दैट क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि देन यू कैन रिजेक्ट लॉट ऑफ हीट, क्योंकि बैटरी की एफिशिएंसी उसकी टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है कि अगर टेम्परेचर्स आर हायर देन यू कांट गेट द राइट करंट drawn from the battery, or बजाय इसके कि you want to make electric vehicle as an efficient vehicle, you make it worse than conventional vehicle. Yeah, so we need to be careful है कि electric vehicles को हम अगर if we can't utilize it properly, we can't design it properly, then it could become worse than conventional vehicle. So ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए. So it is a topic, it is a big topic जो configuration batteries की हैं, battery cells की manufacturing है. That will dictate कि हमें जब आप उसको ट्रेड ऑन करेंगे, that will dictate कि हमें कौन सी डायरेक्शन पे जाना है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है, which is cost effective. Okay, thank you. Mashood, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम साद भाई, अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, जाफरी भाई और स्पेशली सबूर भाई. आई रियली अप्रिशिएटेड, जबरदस्त किस्म की आपने प्रेजेंटेशन दी है. मेरा नाम मशहूद खान है, मैं फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन से हूँ और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर भी हूँ. लकीली या अनलकीली आई हैव बीन पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फोरसाइट कमेटी थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें भी मैंने रोल प्ले किया है. तो आई हैव वन क्वेश्चन सबूर भाई, और आई नीड ये थोड़ा सा आप मुझे इस पे गाइड कीजिएगा. सवाल मेरा ये है कि मैंने इंजीनियरिंग फोर्स के वक्त भी ये बात की थी कि हमें एज ए इंजीनियरिंग पाकिस्तान को अगले 10 साल में हम क्या देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाए. तो यू नो ट्रेंड इज गोइंग टू ईवी और हाइब्रिड पे जा रहा है. मैं मोटरसाइकिल से कंसर्न हूँ कि मोटरसाइकिल सेगमेंट पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन है. तो हमारा सवाल ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिकल चार्जर वी कैन बी डेवलप इन पाकिस्तान. हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी के एरियाज में हम कह सकते हैं कि कुछ की प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि उसके कंपोनेंट बना सकते हैं. तो इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करें, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान से ऐसी प्रोडक्ट डेवलप हो जो हम ग्लोबली पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन बने और इलेक्ट्रिकल चार्जर्स हम अपनी सर्विसेज एज ए पाकिस्तान दुनिया को दे सके. इसमें मुझे थोड़ा सा आपकी गाइडेंस चाहिए बॉस. थैंक यू शबूर भाई. अस्सलाम वालेकुम. जी मशहूद साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और थोड़ा सा आपको बता दें कि क्योंकि आज तो सिर्फ जनरल अवेयरनेस की थी प्रेजेंटेशंस फॉर नॉलेज बिल्डिंग. वी आर पुटिंग टुगेदर ए कंसोर्टियम ग्रुप पाकिस्तान के अंदर विद एक्सपर्ट्स यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, एक्सपर्ट्स प्लस हमारे पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एंड जो हमारे 2-3 इदारे हैं इस्लामाबाद के अंदर उनके साथ मिलके टू बिल्ड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
and tractions and electric machines. So this is a center of excellence. Iski wajah ye hai ki this is not just a automotive issue. This is a multiple industrial issue to build this capability. Charging station jo hai na wo is part of the power electronics. Motor inverter is also part of the power electronics. Now motors ke hawale se ye hai ki motors is going through a big evolution क्योंकि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मशीन जो है वो these are typically used in four wheelers electric machine. लेकिन the trend जो आगे दिखाई दे रहा है वो ये है कि it's all magnet free electric machines. Yeah, so electrically excited rotor is the future. So हमें पहले से तैयार करनी है कि we should not be reliant on one direction कि हम एक ही तरीके से करें. All the industry is going to completely change when the magnet-free electric machines are going to be made. So, लेकिन इसके लिए controls is going to be very, very tough. Control systems, industry control software is going to be very, very difficult, very, very tough. So, हमारा इसका मकसद ये है कि इस consortium का कि we build a knowledge-based group of people and with industry ताकि हम future को अगले 10 साल जो अगले हमारे आ रहे हैं उसमें हमने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी पावर के इश्यूज हैं उसको हम कैसे डील करें, उसको कैसे लोकलाइज करें अपने लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी. दैट्स द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव कि हम सिर्फ अपने लिए ना बनाएं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बनाएं. जी मशहूद साहब आपको आंसर थोड़ा सा मिल गया उसका? जी सबूर भाई जबरदस्त. देखिए मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि इंजीनियरिंग फोरसाइट हम अगले 10 इयर्स का प्लान करें. तो आपकी गाइडेंस बहुत की रोल प्ले करेगी. और जहां आपने यूनिवर्सिटीज का काम के बारे में कहा है, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को एंगेज करें. और मेरी यही दुआ है, मेरी भी ख्वाहिश यही है. अभी भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ. मैंने कहा है कि वन प्रोडक्ट वन जोन $1 बिलियन. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा विजन क्या है. तो आपका आई थिंक इज अ गुड डायरेक्शन. आप प्लीज हमें इसमें रहनुमाई जरूर कीजिएगा कि हम इस तरह से पाकिस्तान से डेवलप कर सके. थैंक यू सबूर भाई. और मैं लास्टली मैं एक्चुअली ड्राइव करता था. मैं आपकी पूरी प्रेजेंटेशन 1.5 आवर मेरी ड्राइव अभी चली रही है. मैंने प्रेजेंटेशन सुनी जरूर है, देख नहीं पाया ड्राइव करते हुए. तो कैन यू शेयर विथ मी? साथ भाई के साथ आप शेयर कर लें तो मुझे मिल जाएगी. थैंक यू सबूर भाई, बहुत शुक्रिया. नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह. अच्छा, रहीम साहब, you have your hand raised. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया. It was very great presentation. एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में बिजली महंगी है और आइंदा किस तरह से बिजली का होगा, तो किस तरह से आप ये देखते हैं ईवी का फ्यूचर. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ईवी किस तरह से प्रोग्रेस करेगा. आया हम वहाँ एक्सपोर्ट ही करेंगे या लोकल भी चीज़ें बनाएंगे, और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं शुरू में? जी, जो पहला आपका सवाल था कि ईवी की रनिंग कॉस्ट यानी कि जो एंड कस्टमर है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी. सो ये बैलेंस है. ये ऐसी चीज़ है कि जिसे कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. के आज अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो कन्वेंशनल कार से बहुत महंगी हैं, तकरीबन 2 to 3 टाइम्स महंगी हैं. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो COP28 का जो मैंने मेंशन किया था कि अफोर्डेबिलिटी जो है दुनिया में, तमाम दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो इस वक्त वन ऑफ द मेजर इशू. और कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है. इसी वजह से ये अगर आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर 10% पेनिट्रेशन है, अमेरिका के अंदर नीली आई थिंक 5 or 7% पेनिट्रेशन है ईवी की. चाइना में 20% पेनिट्रेशन है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इज प्लेइंग एवरीथिंग. तो ईवी को प्रमोट करने के लिए ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जो है ना, ये तमाम फैक्टर्स को we need to work as a EV community globally, इनको कैसे डील किया जाए.
कॉस्ट जो है ईवी की कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आई थिंक आप गूगल भी करके सर्च कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे कि किलोवाट आवर जो फ्यूल का है और किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिक बैटरी की कैपेसिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या इन टर्म्स ऑफ रुपीस बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो विच इज़ व्हाट एवरीबॉडी इज प्रमोटिंग कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव के लिए आपको यू हैव टू फॉलो ऑल द इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, तब जाके आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। अदरवाइज ये कि इट कुड बी अनसेफ और इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। ये आपको आंसर हो गया? डज आंसर योर क्वेश्चन? इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में आइंदा ईवी किस तरह से इवॉल्व होगा? आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें ईवी के हवाले से इवॉल्व होंगी? आया पहले हम सारी चीज़ें मतलब बनी बनाई चीज़ें एक्सपोर्ट करके सेल आउट करेंगे, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी, और एंड हाउ लॉन्ग इट इज गोना टेक? जी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो तो यानी कि इस डाइंग खत्म हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो चाइना के अंदर भी इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो उसकी क्लियरली डेडलाइंस आ गई हैं कि वो इट्स नॉट गोना बी यूज कि ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, रेंज एक्सटेंडेड के लिए फॉर अ टाइमिंग खत्म हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट 15 to 20 years कंप्लीटली डेड। सो उसके लिए ऑल्टरनेटिव इंजन्स कौन से हैं? फ्यूल सेल्स या बैटरी और फ्यूल सेल, ये दो इंजन हैं जो आपको इलेक्ट्रिक मशीन को ड्राइव कर सकते हैं। सो अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो हम इंपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली और हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगी बजाय इसके कि इंपोर्ट करें। सो इस तमाम फोरम का जो जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इट्स टाइम नाउ कि हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, इन चीज़ों को समझें, इन प्रॉब्लम को समझें कि अगले 15 साल के अंदर अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया तो हम इंपोर्टर होंगे। दैट इज द बॉटम लाइन, हम इंपोर्ट करेंगे। उसका मुहावरा उर्दू में है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तेल बिल्कुल वाली कंपनियों से आप गिरे और आप जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या और ईवी कंपनियों की गोद में आके गिर गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी मिसाल है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सबूर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी जो लास्ट साइट पे आपने जो बात की थी इसकी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस की, कि पाकिस्तान बीइंग एन आइडियल लोकेशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो जेपलर का एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, did you find the energy cost that to be effective in Pakistan? Does that, क्योंकि impression ये है, perception ये है कि energy cost is so high in Pakistan कि it's difficult to be cost competitive at a global level. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जेपलर में इसके बारे में? जी जी। Okay, so I'm very clear about this कि I don't think so कि manufacturing cost so energy is really affecting us. हमारी जो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो इफेक्ट कर रही है विच इज knowledge, lack of knowledge, not developing robust processes, not adding automation into the system. ये तमाम चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तो हम कॉस्ट को कभी कम नहीं कर सकते। ये मेजर ड्राइवर्स हैं बेसिकली कि अगर आपके पीस फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल द एंड टेक्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम, आपके ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। इवेंचुअली ये है कि आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि यू कांट सेल इट। सो calculation of each and every steps on at rupees level, that is very important कि हम उसको right from the day one इसको करें, तब जाके आपको कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पर जो है ना मेजर रोड ब्लॉकर्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। सो ये चीज़ें जो है इस पार्ट ऑफ दैट शुड बी पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कल्चर, और हमें इसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि ये है कि उसको समझ जाएं कि रियल लाइफ में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें
I think there are huge amount of potential. सिर्फ हमें उसको चलाना कैसे है वो आना चाहिए. इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑटोमोटिव में राइट हैंड ड्राइव हम लोग जो है वो वी हैव मूव टू थाईलैंड. राइट, ऑल राइट हैंड ड्राइव्स जो है वो थाईलैंड में मूव कर दिए हैं. और थाईलैंड के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ ये है कि they were very open hand, they were open welcoming people, कि जिसकी वजह से तमाम इंडस्ट्री जो है वो वहाँ मूव. और ये चाइना की तमाम इंडस्ट्री मूव कर रही है to the Vietnam, Thailand, Cambodia. They can move this industry to Pakistan. We are not ready कि हम उस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकें. We are not really ready कि हम चाइना से टेक्नोलॉजी ले सकें. We are not really, हमने अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड नहीं किया. That's the real problem. ये आपने बहुत अहम बातें कही. अच्छा, मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा, मोर स्पेसिफिक. लेकिन एक साथ भाई कुछ क्वेश्चंस जो हैं चैट में भी आए हुए हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा. जी जी. लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा. आपने जो बात अभी कही है, इसकी मैं एक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा जो कि आपके बैकग्राउंड से बहुत मुंसलिक है. चाइना में इस वक्त जो चीज मुश्किल है उनके लिए वो सॉफ्टवेयर. इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल कि पाकिस्तान जो है उनको सॉफ्टवेयर मदद कर सके. अब चाहे वो ईवी का सॉफ्टवेयर हो या किसी और चीज का, XYZ किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा किस चीज का सॉफ्टवेयर. लेकिन सॉफ्टवेयर इज एन आइटम जिसमें पाकिस्तान के लोग बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए उसके अंदर. नंबर एक, बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए. नंबर दो, क्योंकि तालीमी एतबार से हमारे यहाँ अंग्रेजी ज़्यादा समझी जाती है बेहतर तरीके से, और ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह जो है आप अंग्रेजी ज़बान की ही लैंग्वेजेस या उसी ऑफशूट्स हैं. तो आप इस पर तवज्जो दें थोड़ा सा, क्योंकि आपका चीन वालों से भी रब्ता थोड़ा सा है, और पाकिस्तान में भी आप काम कर रहे हैं, यूरोप में भी काम कर रहे हैं. तो चीन से जो सॉफ्टवेयर का काम है वो पाकिस्तान कैसे उसकी पाइपलाइन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं. जो आपने पहले बात कही ना कि जो कि चीन से काम जो है थाईलैंड चला गया या फलानी जगह चला गया, ऑफ कोर्स क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि चाइना की अपनी कीमतें जो हैं इंजीनियरिंग की बढ़ रही हैं, तो दे हैव टू फाइंड आउट अदर प्लेसेस के जहाँ पे काम कर सकें. वो वही बात जैसे कि जापानियों ने किया था पहले, तो अब वही हाल चाइना वालों का है, या कोरिया वालों ने कभी यही है. तो इसी तरह सोचे कि सिर्फ अगर एक डिसिप्लिन ले लें सॉफ्टवेयर का, तो उसमें कैसे मुमकिन होगा. शुक्रिया. बिल्कुल सही. और ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने अजमल साहब कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि चाइना की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इज रैंपिंग अप. और इसके अलावा ये है कि उनके पास भी इस वक्त शॉर्टेज है कि नंबर ऑफ, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन इस वक्त ये चल रही है कि चाइना की इंडस्ट्री लोकलाइजेशन में डिमांड कम हो रही है. यानी कि लोकलाइजेशन मींस के लोकल डिमांड्स कम हो रही हैं. यूरोपियन डिमांड इज नाउ बिकमिंग, सो वो जो नंबर जो पहले हम देखते थे कि ओके 2 billion 3 million फॉर चाइना पर ईयर, नाउ इज converting into 1 million for Europe, 1.5 million for USA. That's the kind of thinking चल रही है अभी. So you can आप imagine करें कि there is a big need for functional safety, क्योंकि functional safety में भी बहुत ज़्यादा काम है अभी चाहिए. There's a big need for cyber security, for electric vehicles, for connectivity. वो भी चाहिए. There's a big need of conventional engineering software, जो conventional engineering software जिसमें we just do the coding. So ये तमाम चीज़ें इस वक्त चाइना को चाहिए. We need this a kind of consortium group कि जो ये काम कर सके, हम उन skills को develop कर सके ताकि हम, if we want to provide this as a consulting, a service, या फिर if we want to sell something, लेकिन यह है कि उसके लिए we need to bring our own skills ready for that. For example, ये है कि automotive industry is all about running microcontrollers on a hardware in the loop, software in the loop, processor in the loop, model in the loop, etc. So all of this automatic software coding हमारे यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है वो, उसका कल्चर अभी वो डेवलप नहीं हुआ. लेकिन यह कि इंडस्ट्री तो ये पिछले तकरीबन 15-20 साल से चल रही है ऑटोमेटिक कोड जनरेशन की. We need to bring this into in-house, develop this capability ताकि इसको सेल कर सकें. तो अभी हम लोग उस जगह पे नहीं है, लेकिन we need to have a vision कि ये कब तक करनी है, कैसे करना है. But this is a good platform to talk about it कि हम इसको कैसे किया जाए.
اس کو آج کرنے کی ضرورت ہے، کل نہیں، آج. کیونکہ Absolutely now. کیونکہ دنیا کے اور ممالک بھی تو کام کر رہے ہیں نا، سوئے ہوئے تھوڑی ہیں سب لوگ. کوئی پاکستان کا انتظار نہیں کر رہا ہے، دنیا تو آگے چل رہی ہے. تو آپ کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں کہ ہم کیا بناتے ہیں، ہم قالین بناتے ہیں، ہم لیدر گڈس بناتے ہیں، توجہ اس پہ دیں کہ دنیا کیا مانگ رہی ہے آپ سے. یہ نا کہ اس پہ توجہ نہ دیں کہ ہم دنیا کو ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم یہ دنیا کو دے سکتے ہیں، بلکہ توجہ اس پہ دیں کہ دنیا کیا مانگ رہی ہے، ان چیزوں کو آپ ڈیولپ کریں. تو سافٹ ویئر از اے تھنگ جو کہ بہت لو ہینگنگ فروٹ ہے ایک طرح سے. اور اگر آپ کے کانٹیکٹس اگر ہیں تو آئی تھنک دس از این آئٹم دیٹ شوڈ بی given very very high priority in پاکستان. یہ بات 1980 79 80 میں بات 78 79 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پروپوز کیا تھا پاکستان میں سافٹ ویئر کی طرف توجہ دینے کے لیے. اس کی توجہ ہی نہیں دی اس وقت. We have a couple of other people that have their hands raised. Ismail Saab, you still there? Did we lose Ismail Saab? جی السلام علیکم سر، تھینک یو. میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں کون سی کمپنی آٹو موبائل سیکٹر میں ای وی کے اوپر کام کرنے جا رہی ہے، اور اگلے کیا 5 سے 7 سالوں کے اندر 5 to 10% ہم موجودہ وہیکل کا ریپلیس ای وی میں کر سکتے ہیں سر؟ تھینک یو. I can't answer this question. اجمل صاحب اور آپ پلیز اس کو بتائیے گا. جی اسماعیل صاحب، پاکستان میں خاصا کام ہو رہا ہے 2 ویلرز کے اوپر، الیکٹرک موٹر سائیکلز کے اوپر. I think in that space, electric motorcycle space میں I see quite a bit of progress going on in Pakistan. جو آپ کے 4 ویلرز ہیں، جو گاڑیاں جو ہیں، اس میں اس وقت کام زیادہ ہو رہا ہے امپورٹ کے اوپر، کہ امپورٹ کے اوپر فوکس ہے کہ گاڑیوں کو امپورٹ کر کے پاکستان میں بیچا جائے. لیکن جو موٹر سائیکلز ہیں اس میں کچھ اسٹارٹ اپس بھی ہیں جو اپنا ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. سو ان دیٹ اسپیس موٹر سائیکلز میں I see good growth over the next few years. تھینک یو سر. اچھا جی، اور عمر، you have a question or a comment? جی السلام علیکم. وہ ابھی جو سافٹ ویئر کی بات ہو رہی تھی اس پہ میرا ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا زونل آرکیٹیکچر کا اور تو سافٹ ویئر ڈیفائن وہیکل، تو جس کی وجہ سے سافٹ ویئر سائٹ پہ نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سافٹ ویئر کی جو ٹرین پرسنل جو ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. انکنوینشنل پلیئرز جیسے گوگل، ایپل اور انویڈیا، وہ سب اپنے آٹوموٹیو پروگرامز لے کے آ رہے ہیں، خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کی. تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی لوگوں کی. آئی تھنک ابھی بھی ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. آئی مین ہم جائیں آٹوموٹیو کمپنیز اب ڈائریکٹلی گوگل سے کمپیٹ کر رہے ہیں ریسورسز کے لیے. اور تو یہ ایک بہت بڑی اوپننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت اس کے اندر لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دوسرا اوپن سافٹ ویئر کا کانسیپٹ آٹوموٹیو ورلڈ میں بھی آ رہا ہے. تو ابھی جس طرح جی ایم نے اپنا اے پی آئی جو ہے وہ پبلک کر دیا، اوپن سورس کر دیا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب اور کمپنیز بھی جو کنسورشیم میں شامل ہو رہی ہیں، تو کچھ دنوں میں یہ ایک نیا اسٹینڈرڈ آ جائے گا جس کی وجہ سے جو چھوٹے پلیئرز ہیں، انڈیویجول کنٹریبیوٹرز، وہ اپنے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کو. سو جیسے آپ کی گوگل ایپ اسٹور ہوتا ہے یا ایپل ایپ اسٹور ہوتا ہے، اس طرح کارز کا اپنا ہوگا. ایکسکیوز می. تو جو انڈیویجول سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، کھلنے والی ہے اگلے 3-4 سال میں. تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اس کی مثال ماضی میں بھی ملتی ہے عمر. ماضی میں اگر آپ پی سی کو دیکھیں، جب آئی بی ایم نے جو ہے 1984 میں میرے خیال پی سی انٹروڈیوس کیا تھا 83 میں، اینڈ ویری ان لائک آئی بی ایم، انہوں نے اس کی اسپیسیفکیشن جو انٹرفیس اسپیسیفکیشن تھی اس کو پبلک ڈومین میں لے آئے تھے. وہ جی جی ایکسپیریشن سلاٹس لگائے تھے انہوں نے، 6 ایکسپیریشن سلاٹس تھے شاید آئی بی ایم پی سی میں، اینڈ the specifications were made public in public domain. That made
IBM PC the dominant player, کیونکہ اس میں پھر ایک ڈیولپر نہیں ہے. It's not only IBM that's developing products for the PC, but the entire world becomes. AST نام کی کمپنی, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں ایس جو شفیع صاحب تھے پاکستانی صاحب, وہ تو they made many products, سافٹ ویئر کی سائڈ پہ بھی, ہارڈ ویئر کی سائڈ پہ بھی. تو دس از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. یہ جو آپ نے بات کہی نا عمر, ابھی 100% صحیح بات کہی. یہ اس کو وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے. ریئلی پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں تو اٹس وار فوٹنگ. کیونکہ اس کی وجہ سے کاسٹ آف انٹری بہت کم ہو جائے گی. انڈیویجول کنٹریبیوٹرز بھی انٹر ہو سکتے ہیں مارکیٹ. I think the question is کہ ہم in this forum, how can we help enable how do we help with some focus in this area? Should we do a subgroup? I think I was going to suggest کہ ہمارا ایک کوئی سب گروپ ہونا چاہیے, اور there are already کچھ جیسے ایکلپس فاؤنڈیشن ہے یورپ میں, اور آرم ہے جو برٹش کمپنی ہے, انہوں نے اپنے اوپن سورس ٹول چینز وغیرہ ریلیز کر دیے ہیں, تو کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس کو بیسس بنا کے ہم آگے لوگ کو ٹرین کرنا شروع کر سکتے ہیں. سبور صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے ذہن میں ایک سولوشن آ رہا ہے, ایک پیتھ آ رہا ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ صحیح ہے نہیں ہے. پہلے آپ اپنی رائے دیجیے, پھر میں بتاتا ہوں. جی, سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینسیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آٹوموٹیو جو سافٹ ویئر ہیں, دیز آر میجورٹی آف دی سافٹ ویئر آج کل جو ہیں دیز آر سیفٹی کریٹیکل, اور عام طور پہ جو کنونشنل ڈیسک ٹاپ لیول سافٹ ویئر ہیں دے آر ناٹ ریلی سیفٹی کریٹیکل, لیکن یہ کہ اس میں دیٹس ویئر دی بگیسٹ ڈیولپمنٹ از کمنگ ان. اب یہ چیلنج یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو الائن بوتھ آف دیم, اور یہاں پر یہ کہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ جو انڈسٹری ہے اس میں سیفٹی ایکسپرٹس اور سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں, وہ امبیڈڈ کنٹرول یا سسٹمس کو بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. واٹ دے ڈونٹ نو از دا نیو ٹیکنالوجیز, نیو سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز. سو یہاں پر یہ ہے کہ دے نیڈس ٹو بی اے کنورجنس. جہاں تک مجھے میرا نالج ہے کہ VW ہیز ریسنٹلی opened a huge software house in India. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی میں لیگیسی فور IT سافٹ ویئر کی جو اسٹینڈرڈ IT سافٹ ویئر اپلیکیشنس ہیں از ویری گڈ, اور اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ they wanted to do this bridge with them. پلس اس کی یہ ہے کہ ان کی if you search one of the companies, بے شمار کمپنیز ہیں انڈیا میں جو embedded سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کر رہی ہیں. سو I think we need to think about those models کہ وہ ہمارے سے زیادہ قریب ہوں گے, کہ we should think about setting up a software house with the focus of system design, with the focus of embedded control, with the focus of software development, conventional software, connectivity, and many other fields. Then the language would be easily understood by the Chinese and Europe. So we need to use the right terminology کہ جو لوگ اس وقت استعمال کر رہے ہیں. Diagnostics on air, for example, diagnostics of air is one of the hot topic. تو اس کو کیسے آپ so we need to build up basic diagnostics capability to start with. اس کے بعد یہ کہ next step پہ diagnostics on air کریں گے. So that's the way I see. اچھا, کیا اس کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے کیا یہ ممکن ہوگا کہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس لے کر آئیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے وکسوگن کا ذکر کیا کہ انہوں نے پورا ایک سینٹر آف دا سافٹ ویئر وہاں پہ لگا دیا. دیٹس not going to happen in Pakistan in a short term. ٹھیک ہے, وہ تو we should be pretty clear about it. لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے سیمپل کیسز جو ہیں لوگ کریں, اور پھر they can grow in that, کہ آج انہوں نے ایک کام کیا ایمبیڈڈ سافٹ ویئر کا یا کوئی اور, لیکن اس کامیابی کے بنیاد پہ پھر ان کو اور کام مل گیا, پھر اور کام مل گیا. اس کو جمپ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میکینزم سیٹ اپ کریں تھوڑے سے کہ کیسے جمپ سٹارٹ کر سکیں, خاص طور پہ چائنا سے لے کر آنے کے لیے. چائنا میں میرا خیال یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ ان چائنا.
Japan as well, actually. Japan, I think they're struggling with. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यूरोपियन या अमेरिकन हिंदुस्तान की तरफ दौड़ते हैं सारे, ये उसकी वजूहत को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा आसान मुमकिन ये है कि जापान या चाइना या कोरिया यहाँ के जो है जो काम है वो ज़्यादा आसानी से आ सकता है, लेकिन उसमें मकसद ये है कि जापानी अगर करते हैं काम, दे डू अ टॉप नॉच वर्क, वो आधा पौना काम उनको पसंद नहीं आता। यू कैन डू हैव कुक्ड वर्क। जी, उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि क्या वजह होगी कि वो अपना काम वहां से यहाँ ला सकें। एक तो कॉस्ट है, और दूसरा ये कि टाइम, और या कोई ऐसा हो जो उनके लिए इतना कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, मतलब जैसे लो वॉल्यूम प्रोग्राम हो या आफ्टर मार्केट एप्लीकेशंस जिसमें उनके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आई थिंक आफ्टर मार्केट जो है वो एक अच्छी नीश है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कस्टमाइज करना चाहते हैं। जो स्टॉक कंट्रोलर्स होते हैं वो तो ब्लैक बॉक्स होता है, तो उसको तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक छोटी मार्केट है, उससे शुरू कर सकते हैं, उसको फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता जब लोग ट्रेन हो जाएं तो फिर बड़े काम। सबूर साहब और अजमल साहब, आई मीन ऐसा कोई डिटेल है कि जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब इस ईवी से रिलेटेड, जिसमें हम काम करना चाहें, और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा सॉफ्टवेयर की सलाहियत को देखते हुए उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है कि जो कि स्टेपिंग स्टोन हो बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए। सबूर साहब और उमर साहब, आप जवाब दीजिए, मेरे से बेहतर आप जवाब दे सकेंगे मेरा ख्याल है इसका। पाकिस्तान में कुछ काम हो रहा है लाहौर में। सबूर साहब को हो सकता है ज़्यादा पता हो, क्योंकि वो पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आई थिंक लाहौर में कुछ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो वो माइक्रो कंट्रोलर लेवल का काम हो रहा है, या जी एफपीजीएस के ऊपर काम हो रहा है, या नहीं, माइक्रो Xilinx? कंट्रोलर्स पे ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक वो ऑटोसार्ट एक स्टैंडर्ड है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर का, तो उससे कंप्लाइंट जो ऐसा काम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, वो लोग वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। और उसमें लैंग्वेज ज़्यादातर सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस हाँ, है? नॉर्मली एम्बेडेड में तो ज़्यादातर सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जैसे जो हायर लेवल, अब जो नया काम आएगा जब वो एपीआई का, वो फिर आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। लेकिन सीमेंस वालों का एक सेंटर है पाकिस्तान में जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ओईएम्स के लिए, यूरोपियन ओईएम्स के लिए सीमेंस करती है पाकिस्तान में काम थोड़ा बहुत। अच्छा, तो इसके लिए आई थिंक जी गो अहेड। सिर्फ ऑटोसार के बारे में बता दें कि ऑटोसार जो है वो दिस इज अभी इस वक्त चाइना के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा डेफिनेटली, लेकिन यूरोप के अंदर इट्स वन ऑफ द नॉर्म के तमाम इंडस्ट्री में, खास पे जर्मन और फ्रेंच ओईएम्स, इवन ब्रिटिश ओईएम जो है वो भी ऑटोसार को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑटोसार के जो मेन जो ड्राइवर्स हैं वो टीयर 1 सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो उनकी 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 इतनी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि ऑटोसार का मकसद क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स। अगर आप स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ऑटोसार का मकसद ये है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना और स्टैंडर्डाइज करना तमाम, क्योंकि टीयर 1 सप्लायर्स बहुत से लोगों को सप्लाई करते हैं, वो किस तरह एक ही सॉफ्टवेयर सबकी नीड्स को पूरे करे, तो उनको सॉफ्टवेयर की इंटरफेसेस को स्टैंडर्डाइज, तो ऑटोसार बेसिकली स्टैंडर्डाइज करता है। और इसमें लो लेवल की जो ड्राइवर्स हैं उनकी एलोकेशन को इस तरीके से की जाती है कि ताकि तमाम लोग एक ही प्रोसीजर को, एक ही प्रोसेस को, एक ही आर्किटेक्चर को फॉलो करें। तो इसमें बहुत काम है, लेकिन ये टीयर 1 सप्लायर्स का आमतौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑटोसार की। डेल्फाई हो गया, बॉश हो गया, इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल जी, तो इसमें एक चीज ऐसे करते हैं, लेट्स जस्ट टेक दिस एज अ फॉलो अप कि वी विल लुक टू सेट अप अ सब ग्रुप फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर,
So, we'll obviously need to figure out, somebody to kind of lead that subgroup. But let's just take that as a follow-up. I'll ask some questions हाँ offline. मे भी उसमें एक सजेशन ये भी हो सकता है कि मे बी जो हम वेबिनार्स कर रहे हैं तो महीने में एक दफ़ा हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक को एड्रेस कर लें. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं. लेकिन the subgroup will have to have हाँ some सब ग्रुप विल discussion ड्राइव in the दैट. background. हाँ और फिर उसको maybe bring that information into the webinar sometime. अच्छा एक थोड़ा फर्क सवाल मेरा है. सबूर भाई आपने जो है जिक्र किया थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का या कुछ उस तरह का आपने जिक्र किया था जी. और उसमें आपने ये भी उसका कहा कि भाई कि उसके ज़ाहिर है कि इट हैज मल्टीपल एप्लीकेशंस. और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इवन जो आपके घरों में यूपीएस वगैरह हैं दैट आल्सो इज एसेंशियली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप देखें तो एक दो जगहों के अलावा it is not a widespread technology that is known either from engineering or manufacturing of a board level manufacturing कह लें या component level manufacturing कह लें. Zero component level manufacturing close to zero है. ना आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ना आप इंडक्टर बनाते हैं, ना रजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना कोई चिप बनता है, ना कोई ट्रांजिस्टर बनता है. तो आप इस कंपोनेंट लेवल पे अगर आप आए तो आपके जहन में क्या आता है कि इसमें कंपोनेंट लेवल में हम कैसे आ सकते हैं? क्या इम्कान है पाकिस्तान का कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. मैं तो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि वी नीड टू स्पेशलाइज ऑन कंपोनेंट लेवल सप्लायर. कि कंपोनेंट इज इटसेल्फ सेल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट के लेवल पे हमेशा बात करें. दुनिया में जितने भी लोगों ने प्रोग्रेस की है वो कंपोनेंट से ही प्रोग्रेस की है, कि कंपोनेंट्स पे स्पेशलाइज किया और उसको आगे मजीद उनकी अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड किया, उनके मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके उसको डिज़ाइन करके दिया. सो दैट्स वे वी शुड बी रियली गुड एट, कि हमें कस्टमर्स को समझ के उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना. If we can do this, I think then the whole mushroom starts opening up. So example मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंसर की जो हमने काम किया, तो we only took one small component in the weighing industry. अब यह है कि उससे यह है कि we only looked at कि हमने सिर्फ इसको करना है. अब वो है कि it is selling to anybody, not in पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, बल्कि it can sell to everywhere, anywhere. क्योंकि अगर आपने उसको समझ के बनाया है, you look at उसकी सर्टिफिकेशन क्या क्या है right from the day one, तो then it breaks all the boundaries कि जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही हो, you can export it to anywhere. तो So क्या बता कंपोनेंट सकते स्पेशलाइजेशन का. जी. आप बता सकते हो जो सेंसर की आप बात कर रहे हैं उस पे क्या किस किस्म का सेंसर था वो? थोड़ा सा उसका जरा सा एक जुमला अगर बता सके. लोड सेंसर्स. अच्छा, तो ये स्ट्रेन गेज बेस्ड. या. अच्छा, ठीक है. लोड सेंसर स्ट्रेन गेज बेस्ड, सही, ठीक है. तो उसमें स्ट्रेन गेज आप इंपोर्ट करें, स्ट्रेन गेज भी आपने खुद ही बनाया मकामी तौर पे? नो वी हैवंट डन, लेकिन ये है कि वो उसको भी हमने लोकलाइज करना है. अच्छा, ठीक, सही, ठीक है. क्योंकि स्ट्रेन गेज इज अ ऑफशूट ऑफ अ पीसीबी टेक्नोलॉजी. ठीक है, पीसीबी जो फ्लेक्सिबल पीसीबीज है उसकी टेक्नोलॉजी का ऑफशूट जो है ये आपका स्ट्रेन गेज है. और स्ट्रेन गेज के और बहुत सारे काम भी है, जाहिर है. अच्छा, दूसरा जो है एक मेरा सवाल इसी से कंटिन्यूएशन में ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर लोग कहते हैं कि मैं ये चीज़ तो चाइना से 2 पैसे में खरीद के ला सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है बनाने की. यहाँ पे एक रजिस्टर है या कैपेसिटर है या इंडक्टर है या XYZ जो भी है, उसके बारे में आप उन लोगों को उनको क्या कहेंगे? उन लोगों को जो इस तरह का आर्गुमेंट देते हैं भाई मैं तो ये चाइना से या फलानी जगह से इतने पैसे में ला सकता हूँ, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आपको मकामी तौर पे भी चीज़ों को करने की जरूरत है? जी. सो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आप कॉस्ट इफेक्टिव उसी वक्त इंपोर्ट कर सकते हैं जब आप बल्क बाइंग करेंगे. अदरवाइज ये है कि आपने 10 पीसीज 50 पीसीज अगर बाई किए
تو آپ کو وہ پرائس نہیں ملے گی. سو آپ کو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو ایک یعنی کہ بگ امپورٹر ہونا لازمی ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کے اندر کاسٹ افیکٹو امپورٹ کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو ڈیل ایٹ اے مچ ہائر لیول کہ جس میں آپ کو ایک اچھی پرائس ملے. اب یہ ہے کہ جب آپ بڑے لیول پہ آپ نے کیا تو اس کے لیے لیڈ ٹائم دیٹ بیکمز امپورٹنٹ کہ اس میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں آپ کو شپ کرنے میں وہاں سے. پھر شپ کا ٹائم جو ہے کہ علیحدہ. پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وی ship and deliver as it produces. Ship and deliver as it produces with no time delay, nothing at all. So that's where the difference comes in. کہ ہمارے جو customers ہیں they need a product. ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ ہم نے 1000 سینسر بلڈ کرنے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ڈلیور کرنے ہیں پنجاب کے اندر. we do 100 بلڈ کیے شپ, 200 کیے شپ, 300 کیے شپ. So that's where time comes in, time benefit comes in, cost آپ کی ریڈیوس ہوتی ہے, efficiency بڑھ جاتی ہے, پلس local آپ کی انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے. Cost is better than Chinese, quality is better than Chinese. So what else do we need? اچھا, اس میں ایک اور اسٹیپ میں آگے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ فار ڈسکشن پرپسز کہ میرا خیال ہے پاکستانی جو انویسٹرس ہیں, پاکستانی انویسٹرس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہر جگہ کے انویسٹر کے جیسے ہوتے ہیں, دے آر کاشس, اور وہ اس ٹیکنالوجی کو, اس انڈسٹری سے واقف نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے بزنس پروپوزل بنائے جائیں اور ان کو اوپن پبلک ڈومین میں اوپن کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے ان کو لے, دے یوز دوز ڈاکومنٹس ایز اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور اس پہ پھر وہ اپنا بزنس پلانس آگے فردر ڈیولپ کریں. اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا, آئیڈیاز جو ہیں وہ جو میری اپنی رائے ہے کہ آئیڈیاز جسٹ آئیڈیاز, when it comes to implementation then آپ کو پھر اس وقت یہ ہے کہ then you have to really put a lot of effort on lot of details behind it. So کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں you can make proposals, ظاہر ہے کہ proposal بنا سکتے ہیں, اور اس میں لیکن یہ کہ there should be some central body کہ جو اس کو monitor کرے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں. ادروائز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں, یا پھر اس میں آگے بہت مشکل ہے یہ کرنا. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ we need to have some kind of monitoring یا ڈسپلن, یا پھر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ڈسپلن. ادروائز یہ کہ اسٹرکچر کچھ ہونا چاہیے, اس کے اسٹرکچر ہونا چاہیے بالکل. کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ دس از ون آف دا آئٹمس وچ از لیکنگ, کیونکہ ہر شخص جو ہے نا, جیسے آپ نے بھی اپنی ٹاک کے دوران آج کہا کہ ہر شخص ہر چیز نہیں کر سکتا. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایکسل کریں, پھر وہ جب ٹکڑے سب آ کے جڑیں گے تو پھر آپ کی گاڑی بنے گی. تو جیسے وہی بات ہے, جیسے آپ اینٹ بنانا سیکھیں گے اس کے بعد ہی آپ گھر بنائیں گے نا. اگر اینٹ آپ کو بنانی نہیں آتی تو آپ گھر بنانے جائیں گے تو اینٹیں امپورٹ کریں گے تو کیسے ہوگا. تو بات کسی حد تک اس طرح کی ہے. تو تھوڑا سا سوچیں اس پہ کہ اگر جو ہے کوئی گروپس اس طرح کے ہوں جو کہ اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کر سکے پبلک ڈومین میں. اب جیسے پی سی پاور الیکٹرانکس کی سائڈ پہ ہے, چاہے پی سی بی ہو, چاہے وہ کمپوننٹ لیول مینوفیکچرنگ ہو, کا بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو وہاں پہ, یقین کرے بہت فائدہ ہوگا. لیکن ود اے کیویٹ کہ بھئی کہ یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں, اس کو آگے لے کے جانا ایز اے بزنس پلان یہ آپ لوگوں کا کام ہوگا, جو بھی اس کو لے کے چلتا ہے. دے ہیو ٹو انویسٹ ریسورسز اینڈ انرجی آن دیٹ. تو لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ دینا, تھوڑا سا ایک گراؤنڈ ورک کر دینا. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک آدھ دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کسی سے ویبینار میں یا کسی کلاس میں کہ آپ بتائیے ہم کیا بنائیں آخر. میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ آپ کمپوننٹ لیول سے شروع کیجئے. تو میں نے کہا آپ کے یہاں تار بنتا ہے؟ اچھا, کیا بجلی کی چیزوں کی بات کریں, آپ تار بنائیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا تار بنائیے, نہ صرف ای وی میں استعمال ہوگا بلکہ اور 10 جگہ استعمال کریں گے آپ. مطلب یہ تو اس وقت کا اسپونٹینیس جواب تھا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر سوچ کے کہ کیا چیزیں ہیں جو enabling ٹیکنالوجیز ہیں, what are the enabling technologies or what are the products that can be done with those enabling technologies,
ان کی طرف جو ہے تھوڑا سا انیشیل گراؤنڈ ورک کر دے. اصل میں کام تو یہ یونیورسٹیز کا ہے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ صلاحیت اصل میں ہے نہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, تو اس لیے اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی ہمیں میرے خیال میں اجمل بھائی ایسے سوچنا ہوگا کہ واٹ رول کین وی پلے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت سے اور لوگوں کا کرنے کا کام ہے, لیکن دیٹس somehow we have to figure out what role can we play to kind of connect different. مے بی ہم کچھ اس قسم کی کوئی ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں جو لوگ فالو کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب میں کامن ہوں گی. جی, کوئی ایک آدھ بزنس اسکول اچھا مل جائے, کوئی اچھا ایک آدھ انجینئرنگ اسکول مل جائے, کوئی ایک آدھ اچھا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ مل جائے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ والے کوئی آ جائیں, کوئی کچھ ہم لوگ جو ہے اس پہ ان پٹ دے دے. لیکن دے شوڈ بی, آپ دیکھیں اگر تو یہ بزنس اسکول کے بہت اچھے پروجیکٹ بن سکتے ہیں. یہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اپنا MBA والے یا BBA والے جو کام کرتے ہیں, تو ان کو کہو کہ بزنس پلان بناؤ اپنے فائنل پروجیکٹ کے اندر. کیوں نہیں بناؤ؟ ملک کا پیسہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو سیکھیں گے کہ کیسے بزنس پلان بنتا ہے, کس طرح ایویلیوٹ کریں گے. اجمل بھائی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے کلچر کی پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ آپ کو کر کے دکھانا پڑے. You have to do it kind of like I like the example of Zeppelin. They saw this as an opportunity کہ یہاں پہ load cells بنائے جائیں, and then they're doing it and they're showing it how it can be done. That's almost what has to be done. کہ you have to show them that this can be done, and then maybe you can convince people. Otherwise, لوگوں کو convince کرنا, I think in our culture it's early that's my observation. جی ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. I think that's sufficient. تو اچھا, we should try to wrap up. There are a few comments in the chat window. شاہد صاحب کا ایک comment تھا کہ should we focus more on two-wheelers since we have more volume there? Yes, makes sense, and I think there is quite a bit of focus there already with startups and new EVs, electric motorcycles being announced pretty much on a weekly basis now. So there is quite a bit of focus there. Sohail saab ka ek aur comment tha isme, petrol is cheaper than electricity based on BTUs. Energy content کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. Role of artificial intelligence for EV knowledge. Can anyone explain? عمار صاحب کا question تھا اس میں. عمار صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی؟ جی بالکل ہوں جناب. جی اچھا, اس میں میرا تھوڑا سا کوشچن تھا یہ کہ اپنا جو AI کا استعمال ہے EV کے حوالے سے, اس پہ کوئی اگر نالج ہو کسی کا, ذرا تھوڑا بات کر سکیں تو. کیونکہ ہوگا تو وہ ملٹی ڈائریکشنل, یعنی کہ جو اس کی کنٹرولز ہیں اس میں بھی AI کا کام کرے گی اور کئی حوالے سے. تو اگر کسی نے کچھ پہ پڑھا ہو یوز آف AI فار EVs یا EVs. جی ہمارے ساتھ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال آ رہا ہے, اور خاص طور سے جو نیا آرکیٹیکچر آ رہا ہے سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ویکلس ہے, تو اس میں ڈیٹا سیٹس ہیں ہم کو وہ لوگ آلریڈی اپلوڈ کر رہے ہیں کلاؤڈ پہ, اور پھر وہاں پہ وہ اپنے مشین لرننگ الگورتھمز وغیرہ رن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ لوکلی گاڑیوں کے اوپر بھی جیسے جیسے مائکرو کنٹرولر زیادہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم کریٹیکل ہیں, جیسے بریکس ہیں, پاور اسٹیئرنگ وغیرہ, جس کو آپ کو وہیں پہ رن کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کا استعمال بھی جو ہے وہاں پہ آ رہا ہے. تو اگلے 3-4 سال میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جو ڈیٹا انالیٹکس ہے فار ایگزامپل, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کتنا ڈاٹا کا والیوم ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر 5 لاکھ EVs ہیں
تو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا کسی خاص علاقے سے گزرنے کا یا کسی خاص ٹرین سے گزرنے کا، تو جو اس کی روڈ کی کنڈیشنز کی آبزرویشن ہے. اس طرح فار ایگزامپل اگر میں کوئٹہ جا رہا ہوں اپنی ای وی میں یا اے وی کے اندر، تو جو بھی ڈیٹا سیٹس ہیں وہ اگر میں کوئری کرتا ہوں اس سے تو مجھے بتا دے کہ کیونکہ جو گوگل وغیرہ یہ چیزیں ہیں یا جو ڈائریکشن سافٹ ویئرز ہیں یہ اتنی جلدی اپڈیٹ نہیں ہوتے. وہ مطلب آپ جا رہے ایک دم وہاں پہ سڑک بند ہوگی آن گراؤنڈ تو آپ کو دکھائے گا جس سے ایک سڑک کلیئر ہے. تو اگر آپ سے پہلے کوئی گاڑی گئی ہے 2 دن پہلے وہاں پہ اس سے پرابلم آئے ہیں تو اس کے اوپر کچھ کائنڈلی گائڈ کر سکتے ہیں آپ؟ کہ انٹرنیٹ پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، بلیک بیری جو کمپنی تھی وہ فون تو اب نہیں بنا رہی لیکن وہ لوگ سافٹ ویئر میں کافی کام کرتے ہیں. تو ان کا ایک ہے بلیک بیری آئی وی کے نام سے، IVY، اور وہ سب کسی پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ سرچ کریں تو اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو بھائی، تھینک یو. ابھی جہاں تک آرگنائزیشنز کا تعلق ہے تو بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں یورپ کے اندر یا چائنا کے اندر، اے آئی کا سبجیکٹ جو ہے is not at a production level. It is at a research level جس کی small funding allocation ہوتی ہے کہ okay we need to do this kind of thing, we need to develop this kind of thing. So it's not gone into a volume production as such. لیکن there is a strong intention aftermarket diagnostics on air. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ looking at the future plan of the trip، اور اس کے مطابق یہ کہ you have to adjust your priorities on the wheel slips, adjust your priorities on the آپ کی front and rear torque distribution، اور اس کے علاوہ آپ کی optimizing your speed ahead of آپ کی جرنی کے. مثال کے طور پہ you've got a steep hill coming، آگے آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے سے کیا پریپریشن کی. Understanding from the sat nav، predicting up front اور getting prepared for that. لیکن یہ تمام چیزیں it's all at research level، nothing is gone into production. یہ ابھی فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے اگلے 4-5 سال کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی الیکٹرک ویکلس کے اندر، اسپیشلی پرفارمنس کے لحاظ سے، ہائی پرفارمنس الیکٹرک ویکلس کے حساب سے، اور انبلیویبل تھنگس جو پہلے انٹرنل کمبسٹن انجن نہیں کر سکا اب الیکٹرک ویکل سے ہو سکیں گی وہ. سو الیکٹرک ویکل از گونا بریک دی باؤنڈریز، لیکن صرف بیٹری اونلی نہیں، fuel cells and other places as well. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، really good session. Thank you Saboor Saab for preparing the slides and going through the information with us. Good discussion, good questions, good feedback. If you can share the slides, if you can send them to me, I'll post them in the EV Hub group. That's okay. That's fine, thank you, no problem. Okay. Looks like we have one person that have their hand بہت raised. شکریہ سبور صاحب، it was wonderful. Thank you سبور صاحب، بہت شکریہ. Sohail Saab, you have your hand raised. You have a quick comment? جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے کامنٹ کیا تھا، پہلے تو بتا دوں کہ میرا نام سہیل ہے. ذرا سا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز ذرا سی ہلکی آ رہی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مائی نیم از سہیل، آئی ایم فرام SNGPL. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو انرجی کانٹینٹ ہے پاکستان میں، جو پرائسز ہیں، مطلب ہم جو کچھ بھی بائی کرتے ہیں، ہم الیکٹریسٹی بائی کریں یا پیٹرول بائی کریں یا LPG بائی کریں، تو واٹ وی آر بائنگ، ان فیکٹ وی آر بائنگ انرجی. اور اگر فرض کریں کہ ہم جو ہے تمام کو جو ہے وہ MMBTU میں کنورٹ کر لیں کہ پیٹرول کا 1 MMBTU کتنے روپے کا ہے، اور الیکٹریسٹی کتنے کا ہے، اور LPG کا کتنے کا ہے، اور اس طرح، تو اس کنورژن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو الیکٹریسٹی ہے وہ پیٹرول سے تقریباً 2 گنا مہنگی ہے. یہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا.
اس کا جواب بہت آسان So جواب ہے اس کا. electricity is much expensive. اس کا جی بہت جی آسان جواب ہے. دو اس کے جواب ہیں. پہلا جواب ہے ایک جی کہلاتا ہے سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس، اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ کی جو اویلیبلٹی ہے، آپ نے انرجی ملین بی ٹی یو میں تو کہہ دی، یہ جول میں کہتے ہیں، جو بھی یونٹ لے رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے. اس کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں واٹ دوسری ایور. انرجی میں تو کتنا کنورٹ کر سکتے ہیں. الیکٹریکل انرجی جو ہے آلموسٹ اٹ کین بی کنورٹڈ 90% انٹو میکینیکل انرجی لیٹس سے، جبکہ گیس کی یا پیٹرول کی جو انرجی ہوگی اس کی بمشکل 15-20% جو ہے آپ کنورٹ کر پائیں گے. تو جب آپ دیکھتے ہیں اس حساب جی سے، ایسے ہی ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو وہ then the difference almost vaporizes, doesn't matter. مطلب نیٹ اس کا یہ ہے کہ الیکٹریسٹی از کاسٹ افیکٹو، نیٹ یہ آتا ہے. ہاں، تو جو آپ میکینیکل انرجی کی بات کرتے ہیں، تو جو جی آپ جب کنورٹ کریں گے الیکٹرک انرجی کو تو اس کے 90% بدل دیں گے. جب آپ پیٹرول یا گیس کی بات کریں گے جی اس کے بالکل 15-20% ملے گی آپ کو. دوسرا اس کا جواب یہ ہے جی بالکل ایسے ہی. کہ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو فیکٹرز کو ڈرائیو کرے اس چینج کو from fossil fuel to other technologies، وہ صرف قیمت نہیں ہے، اپ فرنٹ کاسٹ نہیں ہے اس کی صرف، بلکہ اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز، پولوشن فیکٹرز، اور آپ کی فاسل فیول کی اویلیبلٹی کے فیکٹرز. تو یہ فیکٹرز کو بھی آپ جب اکاؤنٹ فار کرتے ہیں تو دین آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو چیز ہے، ایون دو کہ بریک ایون بھی اگر ہو جائے تب بھی آپ کو دوسرے ٹیکنالوجیز آر بیٹر. اور جیسے اب آج جو بات ہو رہی تھی ابھی اسی سیمینار میں اور ویبینار میں، کہ آج کام شروع ہوگا تو 3 سال 5 سال 10 سال بعد آپ کو نتائج ملیں گے. اگر ہم انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو وہی ہوگا کہ کوئی اور جو ہے آپ کا سارا کاروبار لے جائے گا. ہندوستان والے لے جائیں گے آپ کا، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، چائنا نہیں لے گا کاروبار آپ سے تو ہندوستان لے جائے گا آپ کا کاروبار. ٹھیک ہے جی. واللہ عالم. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو Thank مچ you. ایوری ون فار جوائننگ اگین. تھینک یو Saboor صاحب for the slides and for the presentation and for all the participants. So inshallah next week we'll get back together soon. Okay. خدا حافظ. خدا حافظ. Thank you. شکریہ. اللہ السلام علیکم. حافظ. اللہ حافظ.